Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorm integrated session of ENT. Right now we are going to talk about the diseases of the middle ear, in which we are going to talk about acute suppurative otitis media. Yes, always I say that everything before reading, break the name and get the idea. आम को तोड़ते हैं और समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है. Yes, we all know acute. Acute word is indicating the sudden and severe form of the disease. Correct. Now, suppurative. Yes, we all know the word meaning. Suppurative means first formation. यानी एक चीज क्लियर है कि इसमें फर्स्ट का फॉर्मेशन होगा, हमने नाम को तोड़ा. एंड यू कैन सी इट इज ओटाइटिस मीडिया. यस, otitis. Again, here is the itis word with the oto, means inflammation of the ear. Yes, it is itis, or you can say inflammation of ear. But which part of the ear? External ear, internal ear, or middle ear? This media word is indicating that it is asking about our middle ear portion. From the anatomy portion, we all know that middle ear is having the different portion. Just once enumerating from our anatomy portion. Yes, you all are familiar with this diagram, middle ear cleft. So what are the different portion, different parts which are affected in the middle ear? Yes, middle ear cavity. First, eustachian tube. We had seen the middle ear cavity, it is having the gun like shape. So this is gun like. तो यहां से फायरिंग होती है, ये ट्रिगर की तरह काम करता है और ये गन का यस हैंडल वाला पोर्शन है. So you can imagine the middle ear cavity. So eustachian tube is the part of the middle ear. One. Yes, middle ear cavity itself, it will get infected. Here the pus will be collected. Two. Third one is our atic portion, the upper part of the middle ear cavity. Three. Also the editus is getting infected. 4. Also the antrum is getting infected. 5. So you can remember this one. Yes, this all the 5 parts. So I'm not writing the names, just showing here. Now we are going to talk about the etiology of the disease. आखिर कान के अंदर पस कैसे बनता है? आपने अक्सर सुना होगा कान में मवाद भर गया. Yes, this ASOM is same situation when this disease occurs in acute form, then ASOM. and कभी कभी ये disease chronic form में होती है, then it is known as the chronic suppurative otitis media, जिसे हम अगली क्लास में, आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे. But right now, yes, this disease is more commonly involving the infant and child, usually who are with low socio-economic status. So this is your one MCQ. Why? हम पहले पढ़ चुके हैं ऑडिटरी ट्यूब पार्ट में. द इन्फेंट एंड चाइल्ड, दे आर हैविंग द शॉर्टर लेंथ ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब व्हिच इज हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड. एंड इफ मदर इज फीडिंग द बेबी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो उस सिचुएशन में मिल्क जो है ओरल कैविटी से ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर कैविटी को इन्फेक्ट कर देता है. गेटिंग द पॉइंट? नाउ यस, व्हाट इज हैपनिंग? दीज चिल्ड्रंस आर मोर susceptible, they are getting infection with the virus. So virus infection is generally seen, especially the upper tract infection. Definitely the nose, the auditory tube, oral cavity, these all are above. That's why upper respiratory tract infection is more commonly associated. Now see here, after this our viral infection, soon there is the pyogenic organism invasion. Getting the point? Now this will cause spread of the infection. Yes, routes of spread of infection. How it will spread? There are the generally 3 routes. So we are going to look for this different 3 routes. Yes, via, first is our
eustachian tube. Okay sir. Second is via external ear. इन्फेक्शन बाहर से आया, इन्फेक्शन eustachian tube के थ्रू आया. And rarely there is our blood borne infection also. So these are the three causes. Okay, one by one. See here, eustachian tube infection, it is commonly seen in infant. Yes sir, we all know that infants, they are having the shorter length of the auditory tube and it is horizontal, that's why. Second, also it is related with the swimmers. पानी में जब हम डूब डूब के नहाते हैं, स्विमिंग में भी कान के इन्फेक्शन, कान में पानी जाने के चांसेस ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑल्सो इन केस ऑफ द डीप डाइविंग, जो गोताखोर होते हैं, समुद्र में गोता लगा रहे हैं, हाई प्रेशर इज देयर, मोर चांसेस ऑफ द our infection spread via the eustachian tube. Now via the external ear, definitely बाहर से कैसे मिडिल ईयर कैविटी में इंफेक्शन आएगा? when there is a trauma, when there is a perforation. So you will see, if there is trauma, if there is perforation of tympanic membrane, then bloodborne. Yes, see here, the bloodborne, this is uncommon. Okay, so sometimes only the blood is showing the infective way. Okay, कहीं इन्फेक्शन और दूसरी जगह है, वहां से इन्फेक्शन फैलते हुए हमारे मिडिल ईयर कैविटी में आ रहा है. कंप्लीट. नाउ व्हाट आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इन दिस our etiological factor, roots of the infection? You can remember with the mnemonic, that is our tracks. Yes, you can remember T for tumor of nasopharynx. अगर मान लो nasopharynx में ट्यूमर हो जाए तब. यस, R for you can remember there is a recurrent attack of upper respiratory tract infection. Second, A for you can remember एलर्जी. अगर किसी को नेजल एलर्जी है, उस सिचुएशन में इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑल्सो यू कैन रिमेंबर द एडिनॉइड. यस, एडिनॉइड इंफेक्शन अगर हो जाए तब भी मिडिल ईयर कैविटी के इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सी फॉर यू कैन रिमेंबर द क्रोनिक राइनाइटिस. ऑल्सो इन केस ऑफ द क्लेफ्ट पैलेट, देयर इज द मोर चांसेस of, yes, remember our infection of the middle ear cavity. इसी तरीके से S से आप याद रख सकते हैं sinusitis. So this is the one way how you can remember. This is our tracks. So you can remember this mnemonic tracks. RAS. Okay, now we are going to look what are our most common organism. Most common organism, yes, again in different age group different bacteria are responsible. So you will see in infant and young. Yes, infant और young में आप देखेंगे the most common cause is our streptococcus pneumoniae. Yes, 30% of our ASOM, they are caused by the streptococcus pneumoniae. This streptococcus pneumoniae is responsible for the pneumonia, correct sir? So it is causing the upper respiratory tract infection, and infection is spreading to the our middle ear cavity via the eustachian tube. Now see here, also we have to know the other organism like Haemophilus influenzae. It is responsible for the, again, upper respiratory tract infection. It can cause our infection of the acute suppurative otitis media. Also you will see more organism like the Moraxella catarrhalis. Yes,
approximately 12% of the ear infection is caused by, remember, that is our, yes, Moraxella catarrhalis. So these are the different etiological agent. More agents are there, but this is the important list. And never forget the most important MCQ. Streptococcus pneumoniae is most common organism causing the ASOM. Now we are going to look how this disease is progressing. इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम मिलते हैं. Yes, एक पेशेंट आएगा जो बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे कान में दर्द है, कान भरा भरा लगता है, देयर इज द ईयरफुलनेस सेंसेशन इज देयर. क्योंकि ये इन्फेक्शन है इसलिए फीवर के चांसेस भी हो सकते हैं. Yes, ear is involved, so there is the chances of the vertigo in equilibrium also. So we have to do proper investigation. Okay, so how we will identify? There are the 5 stages. आपकी थ्योरी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Yes, आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. There are the 5 stages. What are this? One by one. First, you will see there is stage of tubal occlusion. Okay, yes, auditory tube is getting blocked. So this is the first stage. We will see what are the different signs and symptoms. And then after it, we have to learn about the second stage, that is stage of pre-suppuration. याद करते चलो. यस, नाम से क्लियर है. प्री-सुपुरेशन, पस बनने से पहले. सुपुरेशन मीन्स पस फॉर्मेशन. सो दिस इज द स्टेज बिफोर द पस फॉर्मेशन. एंड देन वी विल सी द थर्ड स्टेज, that will be stage of now the suppuration. अब इस स्टेज में पस बनेगा. Getting the point? And then you will get another one, that is stage of resolution. नाम से क्लियर है कि इस स्टेज में बीमारी हो रही है. And last, sometimes disease is not getting complete. Okay, in that situation you will see there is stage of, yes, there is a complication. अगर मान लो ये डिसीज ठीक नहीं हुई तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. दैट इज द स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन सिंपली. गेटिंग द पॉइंट? वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वी आर डिस्क्राइबिंग ईच स्टेज. यस, फर्स्ट स्टेज इज आवर स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन. नाम को तोड़ो, सोचो और कॉमन सेंस लगाओ. यस, ऑडिटरी ट्यूब जो है वो ऑक्लूड हो गई है. सिंपल. सो व्हाट यू विल गेट हियर, यस, you will get due to the tubal occlusion, auditory tube is closed, blocked. Okay sir, so you will found there is the inflammatory signs. So red, hyperemic, congested, edematous, swollen tympanic membrane is visible. Yes, it is our common sense. और हमने ऑडिटरी ट्यूब वाले चैप्टर में देखा था कि अगर मान लो वहां पर इंफ्लामेशन होता है, यस, वहां गैसेस होती है, ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, अदर गैसेस आर एब्जॉर्ब. इफ inflammation is there, more this phenomena, more negative intratympanic pressure is created. So there is the our, yes, retraction of the tympanic membrane. So you will see there is the negative intra tympanic pressure is raised. So there is, yes, retracted tympanic membrane is visible. Okay sir, एक चीज क्लियर हो गई. In ASOM you will see the retracted tympanic membrane. Clear? Now try to understand. We are going to look what are the different symptoms which will be told by the, yes, our patient, and what are the different signs which are observed by the doctor, one by one. First, you will see the patient will say about the deafness.
वो बोलेगा डॉक्टर साहब सुनाई नहीं दे रहा है, सिंपल। ASOM, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द पस विद इन द ईयर, कान के अंदर पस बन गया तो आदमी को सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट, दैट इज ईयर एक, डेफिनेटली कान के अंदर दर्द होगा। तो एक पेशेंट आपके पास ये दो प्रॉब्लम के साथ आएगा। यस, नाउ you will observe, so what are the our different findings one by one? You will see definitely the retracted tympanic membrane, correct, the very important MCQ. Next, you will see the handle of malleus. Yes, there is a retraction, so handle of malleus, it becomes horizontal. Okay, fine sir, handle of malleus it becomes horizontal, normally ये oblique होता है. Also you will see there will be loss of our light reflex. जो लाइट रिफ्लेक्स हम देखते हैं अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वो भी चला गया. Also you will see there is the conductive deafness. ऑलरेडी पेशेंट ने बता दिया कि सर मुझको ज्यादा सुनाई नहीं देता, बट यू विल ऑब्जर्व दैट विद द ट्यूनिक फोर्क टेस्ट इट इज द कंडक्टिव डिफनेस. Getting the point? These are your different facts which you have to remember. Okay, now try to understand our next stage, that is stage of pre-suppuration. नाम से क्लियर है, इट इज द स्टेज व्हेन पस इज नॉट फॉर्म, लेकिन पस बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी, वाटरी सिक्रेशन शुरू हो जाएगा. तो यू विल सी देयर विल बी द सिम्टम्स एंड द साइन. ओके सर, वी आर गोइंग टू लुक what are the symptoms, we are going to look what are the signs. Okay, one by one. Symptoms, patient will say about the our ear ache, तो कान का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, यू विल सी देयर इज द डिफनेस. यस, आदमी का डिफनेस बढ़ जाएगा. देयर विल बी द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द ईयर लाइक द टिनिटस, कान में घंटी बजने का एहसास, ringing sensation in the ear. Do you remember in pharmacology cinchona, quinine we had seen, they we are having the ringing sensation, tinnitus. Okay, side effect. Also now the patient will have the fever. अब patient में fever develop होना चालू होगा. Okay, these are the points. Now doctor will observe, डॉक्टर देखेगा कि एक पेशेंट कान में दर्द के साथ आ रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, कान में घंटी बज रही है, उसको फीवर भी है. ओके, तो उसका कान का एग्जामिनेशन हम करते हैं. ईयर एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें हमको मिलेंगी. तो यू विल ऑब्जर्व देयर इज द कंजेशन इन द पार्स टेंसा, कंजेस्टेड पार्स टेंसा. ओके, यस, यू विल सी देयर इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. यस सर, दिस इज अवर सपोज tympanic membrane. In this our tympanic membrane, yes, you will observe there is the presence of the dilated vessels, congested vessels, they are getting dilated, so it is giving the appearance like the cartwheel. तो ये आपको एक point diagram याद रखना है. You will see the congested pars tensa, also there is the cart wheel appearance of tympanic membrane. Getting the point? Yes, you will see leash of the blood vessels. These are the our leash of blood vessels which are giving the appearance of the cartwheel. Also you will observe there is conductive hearing loss. So these are our different points. Now we are going to look for the stage of the suppuration. So after this pre-suppuration,
यस, वो प्री सुपुरेशन का स्टेज था, पस नहीं बना था, पानी जैसा सिक्रेशन शुरू हो गया था, बट नाउ देयर इज अ सुपुरेशन फेज, पस विल बी फॉर्म. So what you will get here in this stage, again you can divide under the two category. What are the different symptoms told by the doctor and what are the different signs? Yes, symptoms told by the patient and signs observed by the doctor. So what are the different symptoms? One by one. You will see there is a more and more ear ache. इसी बात है, कान में पस भर गया तो ये तो सबसे खतरनाक सिचुएशन है. वेरी वेरी हाई डिग्री ऑफ द ईयर एक एज वेल एज वेरी वेरी हाई डिग्री ऑफ द stiffness. Getting the point? Now try to understand, there is chances of the fever, vomiting and convulsions, यानी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़े हुए आपको दिखाई देंगे. सबसे ज्यादा सिम्टम इस स्टेज में आपको नजर आएंगे. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड our different more points. Yes, what the signs will be visible, so we are going to talk about our signs. Fine. So you will observe there is the red tympanic membrane appearance. बहुत ज्यादा inflamed tympanic membrane आपको नजर आएगा. You will see there will be bulging with loss of all the landmarks in tympanic membrane. So we all know there is a handle of malleus, lateral process of the malleus. These all are visible. Okay, but now in this stage there is the pus inside the cavity. तो ये tympanic membrane को bulge कर देगी. This all the features will be lost. Yes, what you will see, there is the yellow spot on tympanic membrane. Okay, so due to the pus there will be the certain part which will show yellowishness in spot form. तो वो पस का पार्ट है जो बहुत ज्यादा बल्ज कर गया है. ओके, दिस इज द कॉमन साइट फॉर द पॉइंट ऑफ रप्चर. यस, इस पार्ट पर हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है. येलो स्पॉट ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ड्यू टू द पस. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ वी आर लुकिंग इन केस ऑफ द एक्सरे. यस, अगर आप इस पेशेंट का एक्सरे करते हैं तो आप देखेंगे देयर विल बी क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल्स डेफिनेटली इन mastoid antrum. So infection from the middle ear cavity through the atic, through the editors, it will reach to the our mastoid antrum. पीछे चला गया तो ये क्लाउडिंग हो जाएगी. yes, mastoid air cells will not appear properly in x-ray. So this is also one observation by the doctor. Now we are looking the stage of resolution. yes, अब ये हैप्पी मूवमेंट है. हमारे कान का इंफेक्शन जो है अब वो ठीक होता चला जाएगा. So what the different things you will observe here in this stage of the resolution, you will observe there is rupture of tympanic membrane. Okay sir, there is a rupture of the tympanic membrane which will cause pus release. Okay sir, there is the release of the pus and this release pus is causing डिक्रीज्ड सिम्टम्स. तो जितने भी सिम्टम्स थे वही रहेंगे लेकिन वो अब कम हो जाएंगे. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, वी आर गोइंग टू फोकस अगेन फॉर द सिम्टम्स एंड साइंस. so focus here, symptoms. What are the different symptoms? All symptoms like previous but decreased. वही कान में दर्द, वही स्टीफनेस, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंस. यस, यू विल सी द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इनसाइड इट. क्योंकि रप्चर हो चुका है तो आप देखेंगे ब्लड
tingled discharge. Yes, there is a blood tingled discharge which is leading to the mucopurulent situation, and also all signs will be present but they will be decreased. So these are our different findings which you have to know. Now further focus for the stage of the complication. So we are going to talk about our stage of the complication. Yes, if virulence of organism, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म अगर बहुत ज्यादा है, इज वेरी हाई, तब कॉम्प्लिकेशन होगा. अदरवाइज एट द स्टेज ऑफ द रिसोल्यूशन एवरीथिंग विल बी ओके. सो यू विल सी इन दिस सिचुएशन नो रिसोल्यूशन. ओके सर, रिसोल्यूशन नहीं हुआ. और अगर रिसोल्यूशन नहीं हुआ तो क्या होगा? यू विल सी देयर इज एक्यूट मैस्टोइडाइटिस. इन्फेक्शन और बढ़ता चला गया, मैस्टोइड का इन्फ्लामेशन हो गया, एक्यूट मैस्टोइडाइटिस. ऑल्सो यू विल सी द सब पेरिओस्टियल एब्सेस. यस, सब पेरिओस्टियल एब्सेस इज फॉर्म. Yes, you will observe there will be the seventh cranial nerve palsy. Facial nerve palsy will be there, and you will see there is the inflammation of the labyrinth. So labyrinthitis is present, and it will lead to the inflammation of the petrous part of the temporal bone, that is the petrositis. Okay, now this petrositis will lead to the extradural abscess. There is a pus collection outside the dura mater, extradural abscess. Also it will lead to the abscess in the brain, so it is causing the brain abscess formation. Okay, अगर आपकी एनाटॉमी याद हो रही होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं, yes, pus is too much in the middle ear cavity, then it is reaching into the mastoid cavity, so mastoiditis. Then it is eroding the periosteum of the skull bone, so subperiosteal abscess. Yes, middle ear is related with the seventh cranial nerve, so facial nerve palsy. Then it is involving the labyrinth, so labyrinthitis. It is labyrinth is within the petrous part of temporal bone. हमने एनाटॉमी पूरी डिटेल में देखी हुई है फर्स्ट ईयर में. सो यू नो मिडिल ईयर कैविटी इज विद इन द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, सो पेट्रस बोन इज गेटिंग इन्फ्लेम्ड, सो पेट्रोसाइटिस. It is causing the extradural abscess. Yes, pus collection outside the dura mater, that's why extradural abscess. Then infection is reaching within the brain, so brain abscess. And you know, हमने एनाटॉमी पढ़ा था, superior sagittal sinus ऊपर की तरफ, inferior sagittal sinus, then there was our straight sinus. Yes, two intracerebral vein of the Galen, they were meeting together and making the, yes, inside the brain, the great cerebral vein of the Galen vein was meeting with the inferior sagittal sinus and making the straight sinus. Straight sinus was taking turn on the left side, our left transverse sinus, and superior sagittal sinus was taking turn on the right side, right transverse sinus. And then these sinuses are making the sigmoid sinus passing through the jugular foramen, and then it was making the internal jugular vein. So transverse sinus, sigmoid sinus, they are lateral side, so our middle ear cavity is also on the lateral side. So this brain abscess, it can cause lateral sinus thrombus formation, that's why thrombo. Yes, vein inflammation, that's why phlebitis. So this all are given in your textbook. One beautiful our flow chart, so that you can get more and more marks in your theory exams. Getting the point? Okay, so now we are going to look for the different symptoms and the signs. So in this situation, now we are going to look for the treatment. Definitely it is the infection due to the bacteria. So mainstay of the treatment is our antibiotics. So remember the main line of the treatment, that is our antibiotics. Yes. So what are the different antibiotics? Definitely, because it is caused by the our Streptococcus pneumoniae, which is sensitive for the penicillin. So you will use the penicillin, लेकिन penicillin के खिलाफ resistance बहुत आसानी से आ जाता है, penicillinase enzyme produce कर देते हैं. That's why the higher
better class of the penicillin we are using. We will use the amoxicillin, we will use the our ampicillin. Do you remember the co-amoxiclave which was having the our company name? Yes, never forget, that is our augmentin or enhancin. ये नाम आपको बहुत काम आएगा, don't forget it. Okay, yes, if the patient is having the resistance for the penicillin or allergy to the penicillin, then you will use the erythromycin or our cephalosporin second and third generation drugs, cefaclor, cefixime, cefpodoxime, yes, ceftibuten. This all. Also you can use the cotrimoxazole. Okay, so here the different company name is given. Okay, cetron is important. Okay, and total daily dose, no need to mug up right now in our undergraduate time. Okay, so these are our points. Now after this our antibiotic, what are the other treatment criteria? नेक्स्ट इज अवर डिकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप. यस, क्योंकि इस डिसीज में नाक बंद हुआ ऐसा एहसास होता है, बिकॉज यूस्टेकियन ट्यूब इज ऑल्सो गेटिंग ब्लॉक, सो वी आर यूजिंग द नेजल डिकंजेस्टेंट. यस, नेजल डिकंजेस्टेंट फार्मा के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं. डू यू रिमेंबर द इफेड्रिन? यस, नेजल ड्रॉप हम यूज कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीमेटाजोलिन, ये हम फार्मा में भी पढ़ चुके हैं, इसे आप यूज कर सकते हैं. ऑल्सो यू कैन यूज द कॉन्जेनरल फॉर्म, दैट इज xylometazoline. These are the drugs which can use for the our nasal decongestant drugs. नेक्स्ट ड्रग इज ओरल नेजल डिकंजेस्टेंट, जिसको हम ओरल रूट से लेंगे. इसमें स्यूडोइफेड्रिन यूज किया जाता है. ओके, नाउ आफ्टर दिस देयर इज द पेन इन द ईयर, दैट्स व्हाई वी विल यूज द नेक्स्ट ड्रग इज डेफिनेटली एनाल्जेसिक, क्योंकि कान में दर्द है, फीवर होता है, इसलिए आप यूज करेंगे एंटीपायरेटिक. एंड वी ऑल आर अवेयर, हमने अपनी फार्मेकोलॉजी कंप्लीट कर ली है. वेरी वेरी गुड ड्रग्स आर द एनसेड्स. सो वी विल यूज द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आप पैरासिटामोल यूज कर सकते हैं. आई एम राइटिंग ओनली द PCM, पॉपुलर फॉर्म विच इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स. देन यू कैन रिमेंबर, बिकॉज देयर इज अ पस को आपको क्लीन करना है, इसलिए ईयर टॉयलेट करना पड़ेगा. टॉयलेट मीन्स क्लीनिंग. ओके, रिमेंबर, फाइन. यहां पर टॉयलेट का मतलब ये नहीं ले लेना. ओके, सो रिमेंबर देयर इज द आवर नेक्स्ट प्रोसीजर, दैट इज द ईयर टॉयलेट. So we have to clean the ear. Fine. Try to understand. We will use the sterile cotton buds. Okay, along with the antibiotics. इसके अलावा विक्स आप यूज कर सकते हैं, जो ईयर टॉयलेट में मदद करेंगे. ओके, so cotton wicks also you can use. Now next treatment strategy, that is our dry local heat. Simply there is a pus, there is a inflammation, तो ड्राई लोकल हीट, कान की सिकाई हम करेंगे, तो ये भी एक वार्म फीलिंग, गुड फीलिंग देती है. यस, इट विल रिलीव, इट विल बी हेल्पफुल to relieve the pain. Okay, now also we can use the myringotomy. अब ये किस चिड़िया का नाम है? Do you remember? I told you टॉमी का मतलब होता है कटिंग. एनाटॉमी, एना मीन्स टू सी, टॉमी मीन्स कटिंग. कहीं पर भी टॉमी वर्ड आया मीन्स कटिंग. एंड मिरिंगो का मतलब होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. So remember, this myringotomy is nothing, it is the our tympanic membrane incision, and with the help of the tympanic membrane incision we can drain the pus. Yes, remember, we can drain the pus. Now try to understand, when we do this myringotomy, अलग से myringotomy के बारे में हम लर्न करेंगे.
but few things criteria when we do the myringotomy. Just few points. A, when tympanic membrane is bulging and there is too much pain, acute pain. Getting the point? Second, when you will perform the myringotomy, when there is the incomplete resolution, even with एंटीबायोटिक्स. आपने एंटीबायोटिक दे दिया, उसके बाद भी डिसीज ठीक नहीं हुई, तब आप मेरिंगोटोमी करेंगे. ऑल्सो इफ देर इज द कंटिन्यूअस परसिस्टेंट डिफ्यूजन मोर देन 12 वीक्स, अगर 12 हफ्ते से ज्यादा कान बह रहा है, 3 महीने से ज्यादा कान बह रहा है, तब आपको कान के पर्दे में कटिंग देनी है और पस को ड्रेन करना है. So these are the our different points regarding the ASOM. Remember, this ASOM topic is very most important for the short note, for the long note, for the MCQ exams. So don't ask at time of the exam what are important, what are not important. This topic is important for your exams. Okay, NEET PG next, again this question is important. Thank you very much. God bless you all. Now we are starting a live doubt discussion session. Thank you.